Hello friends, today we are studying abelian group. Guys, here are right, J is an abelian under the multiplication. Guys, किसी भी ग्रुप को अंडर द मल्टीप्लिकेशन abelian प्रूव करना है तो उसमें सिमेट्रिकल अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल सिमेट्री होनी चाहिए उसकी कंपोजिशन टेबल में अबाउट द डायगोनल लाइक दिस. सिमेट्री है क्यों? क्योंकि दिस इज डायगोनल 5 5 7 7 11 11 एंड 7 दिस साइड 7 7 5 5. सो गाइस सिमेट्री होनी चाहिए under the multiplication in composition table, then we call it abelian group. So we are going to prove this. Guys, this is show that the set of integer 1 5 7 11 is a group under the multiplication modulo 12. So I write here 1 5 7 and 11 1 5 7 and 11. So guys, under the modulo 1 5 5 7 7 11 में, क्योंकि 12 से सब नीचे हैं तो ये एज इट इज आ जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद. But when 5 5s are 25 and we know that 12 2s are 24, so got 1 here. Now 5 7s are 35 and under the 12 35 under the 12 what we have 12 2s are 24 and we got 11 here. Now 5 multiply with 11 which is equals to 55 and 12 time what कि 55 से छोटा आ जाए. 12 2s are 24 12 3s are 36 12 4s are 48 and whenever I going to subtract it then I got 7 here. Now complete the table. 5 7s are 35 again 11 remain. 7 7s are 49 so 12 again 1 remain क्योंकि 12 4s are 48 and 7 11 that means 77 again 7 11 77 again dividing by 12 we got remainder 5 11 11 11 1 11 11 5s are 55 and 55 remainder with 7 and 7 times 11 is 77 and remainder what we got 5 here and 11 times 11 is 121 and when I am going to divide it 24 as a remainder I got 1 here. So guys, अभी हमें इसको abelian प्रूव करना है. abelian के लिए क्लोजर फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी. गाइज इस पे ऑपरेशन क्या लगाया अंडर द मोडुलो 12. हमारे पास एलिमेंट क्या थे? सेट था हमारा 1 5 7 11 का. जब मैंने इस पे ऑपरेशन लगाया तो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कंपोजिशन टेबल में जो ये ना हो 1 5 7 1 इनमें से ही एक ना हो. सो गाइज हर एक नंबर जो है वो इस सेट में प्रेजेंट है. दैट मीन क्लोजर होल्ड. नाउ वी हैव एसोसिएटिव. Guys, this is under the multiplication and we know that associative property result always hold in case of multiplication. Now existence of identity. Guys, किसी भी composition में अगर 1 1 1 1 in case of real, hence identity always exists. Now we have existence of inverse. Guys, inverse exist कर रहा है. कैसे? 1 का inverse 1 होगा क्योंकि identity हमारे पास क्या है 1 है. 5 का inverse 5 होगा खुद. क्यों? क्योंकि अंडर द मोडुलो 12 चल रहे हैं. सो 5 5s are 25 and we know that 12 1s are 12 12 2s are 24 and remainder is 1. so identity मिल गई हमें. now 7 7s are 49. so guys 12 4s are 48 again remainder 1 मिल गया. again हमें identity मिल गई. मतलब हर एक का इन्वर्स क्या है? खुद ही एलिमेंट. 5 का इन्वर्स 5 है, 7 का इन्वर्स 7 है और 11 का इन्वर्स 11 है और 1 का इन्वर्स खुद 1 है. सो गाइज हमें इस सेट के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स में मिल गया. नाउ दीज थिंग प्रूव दैट दिस इज अ ग्रुप बट दिस इज abelian ग्रुप. वाई सो? बिकॉज a स्टार b इज इक्वल्स टू b स्टार a. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है. कैसे? 1 times 7 is equals to 7 times 1 because 1 multiplied with 7 is 7 and 7 multiplied with 1 is 7. So guys, under the multiplication कोई भी ग्रुप है जब वो abelian कब होगा? जब composition table are symmetrical about their principal diagonal. So this is the principal diagonal and it is symmetrical about the principal diagonal. 5 5 7 7 11 and 11 7 and 7 5 and 5. So this is symmetrical. That's why जो भी composition table symmetrical होगी तो under the multiplication always form a abelian group. Thank you guys. If you like my video, like and subscribe us.